Assalamualaikum everyone. Welcome to the Cricketing Hour. Peshawar Zalmi are through after a topsy-turvy game against Islamabad. To analyze that, I'm Hasan Malik. I'm Hadi, Saif. And here we are to talk about how they have once again gone through, the only team to qualify in every single edition of the PSL and triumphed against Islamabad. So firstly, Hadi, at the halfway stage, did 183 feel like enough? Well, it was mixed feelings for me because batting looked very easy in the first 10 overs when you're talking about Peshawar's batting, the way Babur played or the way Haris played. Lag raha tha ki 180 would not be a good score. Like, in batting in the death was very, very difficult. Runs dried up, and I just felt that it was enough because the pitch was tricky in the last 10 overs. Ball was reversing. So it was always going to be difficult after that 13 over mark for Islamabad United. I think one factor is whenever Babar Azam bats, he always makes it look easier than it actually is. Haris played fantastically as well. Saim's been great throughout the PSL. But Peshawar at the end definitely slowed down. काफ़ी वो collapse कर गए थे. And how much of it do you think was good bowling by Farooqi and Hasan Ali? And how much of it do you think was simply bad exploitation of resources by the Zalmi team? I think it was decent bowling. Like, I don't think it was anything extraordinary. But Peshawar, after the wicket of Babar Azam, really collapsed. They couldn't really hold on, couldn't accelerate that 100. I think when Babar left, the 100 was around that 11 per over mark. लेकिन उसके बाद it went down to 8.5 to 9 runs per over, which is pretty bad considering that the 100 in the first, I think, 10, 11 overs was almost 12 runs per over. So I think in Babar's view, if Babar would have kept standing there, so they would have reached that 200 mark. Let's talk about Islamabad now, and let's use the word choking, because choking is sometimes a word you associate with Peshawar. They only have won 46% of their playoff matches. They've only won 25% of the 4 finals they've played. Islamabad meanwhile उन्होंने 2 ही फाइनल खेले हैं, 2 बार वो ट्रॉफी लेके चले गए हैं despite not being that consistent. So in the big games, one would expect Islamabad to perform, and they were performing. 128 for 1 when suddenly the death overs came, the pitch started slowing down, balls started reversing, and they simply couldn't play. तो आप ही ख्याल से अगेन इसमें कितना हाथ इस्लामाबाद का था, कितना हाथ पेशावर का था? बिकॉज 128 for 1 after 14 overs, game looked dead and gone. नहीं, it did look dead and gone, and after, because क्या कहते हैं, शुएब मकसूद and even Alex Hales की partnership काफी steady जा रही थी. They were accelerating. It was not like runs had completely dried up. The occasional 4, occasional 6 was here, there and then. लेकिन उसके बाद जो विकेट ली उन्होंने, आई थिंक आमिर जमाल ने शुएब मकसूद की, दैट रियली कॉट under the skin of Islamabad United. And after that, it just sparked a collapse. Azam Khan, we saw Salman Rashad bowled him for only 2 runs. Colin Munro bowled for only 4 runs. Fahim Ashir of that unfortunate run out by Amir Jamal. So they just couldn't stay the ship after Shoaib Maqsood was gone. हाँ, सुहेब आज बड़ा अच्छा खेले, एलेक्स हेल्स एज वेल. यूजली हम एक्सपेक्ट नहीं करते फॉरेन प्लेयर्स को इतनी टफ सब कॉन्टिनेंटल पिचेस जब होती है व्हेन द बॉल इज ग्रिपिंग वो परफॉर्म करें इतना. बट हेल्स वाज प्रीटी गुड. सुहेब एज वेल, रिटर्न टू फॉर्म फ्रॉम हिम. बट अ कंप्लीट मिडिल ऑर्डर कोलैप्स. आज आजम नहीं चले, मंडो नहीं चले, उनको आज डिमोट किया हुआ था प्लेइंग एट नंबर 4. फ़हीम अशरफ आए, उनको आज प्रमोट कर दिया फ्रॉम नंबर 7-8 टू प्लेइंग एट नंबर 5. एंड इवन दो ही इज़ द मैन इन फॉर्म फ्रॉम देम, इवन दो ही इज़ द मैन आई बैक टू बी अ बिग डिफरेंस मेकर टुडे, ही वॉजंट एबल टू डू एनीथिंग. शादाब फिर भी थोड़ा सा चल पाए, बट बैटिंग में हेल्स और सोएब के अलावा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं नजर आई हमें. और हसन, डू यू रियली थिंक कि आसिफ को ड्रॉप करना है इस मैच में फॉर कॉलिन मनरो? वाज इट अ गुड मूव कि नहीं? क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप ऐसे फिनिशर को ड्रॉप करना चाहिए व्हेन टॉकिंग अबाउट द फॉर्म कॉलिन मनरो हैज हैड. आई थिंक ऑनेस्टली अगर फॉर्म की बात की जाए तो वे आसिफ का भी इतना कोई ख़ास नहीं है. मनरो का ये है कि फिर भी ये रिलेटिवली मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, पूरे इंटरनेशनल सर्किट, T20 सर्किट में वो खेला हुआ है, तो शायद जो आपके डोमेस्टिक बॉलर्स हैं उनको वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएँ. खैर आज तो नाइदर वेल मनरो भी कोई इतना ख़ास नहीं चले, तो इन हाइंडसाइट मे बी यू कैन गो फॉर आसिफ, बट आई थिंक मनरो वॉज प्रॉब्ली द बेटर चॉइस फॉर देम. हसन अली, उनको तो खैर इतनी बैटिंग भी नहीं मिली, बट आई थिंक कि एक और फैक्टर ये भी है, इस्लामाबाद ने सही तरह रिस्क नहीं ली ड्यूरिंग दैट लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन सुहेब एंड हेल्स. अगर आपको पता है आपके पास काफ़ी लंबी टेल है, आपको पता है आपके पास एंड पे हसन अली, वसीम जूनियर भी हैं जो छक्के मार सकते हैं, तो यू रियली शुड बी प्लेइंग एट अ हायर स्ट्राइक रेट. और जब आपका फॉर एग्जांपल आजम खान आके 3 बॉलें ज़ाया कर देता है, या मंडो आके 9 बॉल ज़ाया कर देता है, मे बी इवन कॉस्टिंग देम द गेम, तो आपकी बैटिंग डेप्थ तो यूज़ ही नहीं हुई, उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर?
नहीं, और हमने देखा कि पेशावर में भी एग्जैक्टली यही हुआ था. हमने टॉक अबाउट टॉम कोलर कैटमोर ने 16 ऑफ 22 balls की इन दैट which is totally unforgivable seeing कि आप 183 कर रहे हो. तो we saw that happening in the later stage of the match as well जब इस्लामाबाद बैटिंग करने के लिए आए. लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम बॉलिंग स्कोर कार्ड को देखें when we're talking about इस्लामाबाद यूनाइटेड कि शादाब को अपने 4 overs में 40 पड़े हैं and मुबशिर खान only bowled 1 over after being hit for 7 runs, which is very interesting seeing कि शादाब was not having a great day. So should he have kind of sacrificed a few of his own overs for Mubashir's overs? हाँ डेफिनेटली शादाब का मेनली है कि उनको जो ज़्यादातर रन्स पड़े दोज वर इन हिज फाइनल फ्यू ओवर्स, तो वो पहले डिसीजन ले नहीं सकते थे. अगर पहले 2-3 ओवर सही हो गए फिर तो आप कहोगे फोर्थ ओवर करा लो. अगर फोर्थ में रन्स पड़े देन इन हाइंडसाइट आप कह सकते हो कि मे बशर शुड हैव बीन बोल्ड मोर. हैविंग सेड दैट आई स्टिल थिंक कि इस्लामाबाद अगर 6 बॉलर्स के साथ आया हुआ है एंड दे बेसिकली प्लेइंग विद 5 बॉलर्स, अगर वो मुबशर को बॉलिंग दे ही नहीं रहे तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज द बॉलर हु बोल्ड 1 लेस ओवर वाज फ़हीम who was going pretty decent, took a wicket as well. तो बाकी on the other hand if we compare it to Peshawar's bowling तो they kept changing their bowlers. सलमान इरशाद है, उनने 2 at the start कराए, 2 at the death कराए, 2 for 18, economy of 4.5. इतनी अच्छी तो ODI में अच्छी होती है, T20 के डेथ ओवर्स में that's worth its weight in gold. Apart from that, आज मुजीब और रहमान bowled pretty well up front in the power play, got a crucial wicket as well. लेकिन do you think Peshawar could have broken the Hales-Maqsood partnership earlier? Any changes for that? I think they could have, but credit goes to Shoaib and Alex the way they played. I think they played real cricketing shots and did not throw away their wickets. Unlike we saw in Peshawar's case where players like even Tom Curran, Cadmore, Nisham or Amir Jamalani threw their wickets in the later part of the match. So हमने देखा कि they built a partnership. They really played those proper classical drives and played those shots and really kind of took on which looked like a difficult pitch. अच्छा अब ज़रा PSL की हिस्ट्री की बात करते हैं जिसको मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे सोचने में बिकॉज इस्लामाबाद फर्स्ट 3 years 2 finals 2 trophies. Next 5 years 0 finals 0 trophies. Again they're going home with nothing for it to show. उनके पास इतना टैलेंट भी है, शादाब है, आज़म है, हसन अली भी है, but they're not converting that into trophies. Forget trophies, they haven't even reached a final since then. तो आपके ख्याल से इसका इनहेरेंट रीज़न क्या है? अब हम हर चीज़ बैड लक को तो नहीं कह सकते. ग्रांटेड के 2021 में दे वर टॉप ऑफ द टेबल, चोक्ड अंडर प्रेशर, अगेन टुडे क्वालिफाइड थर्ड, दे क्वालिफाइड अहेड ऑफ ज़ल्मी बाय अ फेयर बिट, लेकिन फिर भी आज ऑन द डेट मोस्ट मैटर्ड जीत नहीं पाए. तो क्या इसकी कोई इनहेरेंट वजह है या जस्ट बीइंग आउटप्लेड ऑन द डे? नहीं, आई थिंक हम बात करें इस्लामाबाद की तो देयर अ टीम हु रिलाइज ऑन यंग टैलेंट्स लाइक आजम खान, फहीम, अशरफ, हसन अली. दिस इज द 2018 पाकिस्तान टीम बेसिकली जो तब खेलती थी. लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्लेयर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द नेशनल टीम. फहीम, हसन अली, इवन शादाब इज नॉट बीइंग प्लेइंग दैट ग्रेट. वसीम इज आल्सो इफी. शुएब मकसूद हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम एज वेल. तो हम इन प्लेयर्स की बात करें तो इट लुक्स लाइक इवन द नेशनल टीम इज नॉट प्रेफरिंग दीज प्लेयर्स. तो सीइंग द डिक्लाइन इन फॉर्म फ्रॉम 2016 and 2017 से लेके आज तक हम बात करें तो इनके ये फॉर्म में काफ़ी बड़ा डिप आया which I think contributed to them not reaching a final or not playing in those special moments. जैसे हम बात करें with the new ball, Fahim Ashraf was not threatening at all with the new ball. Babar Azam was late cutting him with the new ball. तो हम बात करें on them as an attacking side, even Hasan Ali, if you're going to off cutters as a delivery against Babar Azam with the new ball, तो फिर I think you are seriously lacking confidence. अच्छा तो with a look towards the future, if there's one thing Islamabad need to focus on to fix their team in the upcoming drafts for the next PSL, what area of their squad do they need to focus on? For me, I think फिर भी अभी भी उनकी काफ़ी बैलेंस टीम है. मिडिल ऑर्डर में they probably need an extra player. नहीं, I think they need a world-class bowler in my personal opinion. I think Fahim and Roman Rice are decent bowlers on the day, but they're not world-class specialists, and they can get hit for many, many runs. Fahim, you can argue, is a good all-rounder. लेकिन हम बात करें bowlers की, हसन अली की, I think Hasan Ali or even Mohammad Wasim on a certain extent are not great world-class bowlers. They can get hit on the day, especially Hasan Ali. So I think Hassan Ali would not be retained next PSL, most probably seeing the kind of form he's had in this PSL. Say, and let's end this with a final word about Peshawar. Babar Azam's squad goes through once again. They'll now be facing Lahore Qalandars. Lahore now are coming off a loss.
Peshawar are coming off a win. It's clear which team has the momentum, and I think given the choice, I'd probably back Peshawar to go all the way against Lahore. Thoughts? Well, I think Peshawar is going to win, in my personal opinion, evidenced by my Peshawar आपकी shirt. शर्ट से हाँ नजर आ रहा है थोड़ा. Lekin I told you that Babar was going to be the player to look forward to in this match because he's a big match player. And I think against Shaheen, he's going to step it up in the match. या फिर वो 0 पे आउट होंगे I think against Shaheen. या फिर दोनों extremes. या फिर वो 70 करेंगे. Either of the two, and that will decide the course of the match. So let's see what happens. It will be Shaheen versus Babar in that mega event, and I am backing Babar in that respect. Alright, that's a very specific prediction there. One of the two extremes for Babar Azam. Right then, that's a wrap from the Cricketing Hour. Thanks for tuning in. Allah Hafiz.